Our today's topic is transition elements. In this video, we will see what are transition elements, why they are named as transition elements, what are their general properties and applications. First of all, what is meant by transition? Transition means between two states, between two places, as the D block element or transition elements are present in periodic table between S and P block, that's why they are called as transition elements. What are transition elements? Transition elements are the elements that have partially filled d orbital. These are also known as transition metals because जितने भी d block elements हैं they all are metallic in nature, तो इन्हें हम transition metals भी कह सकते हैं. They have partially filled d orbital. Partially filled क्या mean है? From d1 to d9 they can have any number of electron. ठीक है, d2 3 4 5 any number of electron they can have, but they cannot have empty d or completely filled d. There is proper definition by the IUPAC for transition elements. It states an element having a d subshell that is partially filled with electrons. दिस इज द फर्स्ट डेफिनेशन. एक ऐसा एलिमेंट जिसका डी सबशेल पार्शली फील्ड है दैट इज कॉल्ड एज ट्रांजिशन एलिमेंट. एंड सेकेंड डेफिनेशन स्टेट्स an element that has the ability to form stable cations with an incompletely filled d orbital. d orbital incomplete है despite that its cation is stable, then it is called as transition element. हम देखते हैं नॉर्मली कैटायन स्टेबल नहीं होते. फॉर एग्जांपल सोडियम प्लस है, इट इज नॉट स्टेबल एट ऑल. इट हैज टू फॉर्म बॉन्ड विद सम anion. It has to develop interaction with some anion, while the transition metal cations are stable. तो ये इसकी definitions हैं. In general, any element which corresponds to the d block of the modern periodic table is considered to be a transition element. मीन्स के डी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स हैं these are all transition elements in general. कौन कौन से हैं ये? From group 3 to group 12. Let's have a look at the periodic table. Here you can see from scandium to zinc, it's group 3 and it's group 12. These are all transition colored as yellow. But there are few exceptions to this generalization. वो exception क्या है? Mercury, cadmium and zinc are not considered as transition element. Why? Because of their electronic configuration which corresponds to n-1 d10 ns2. These three are not transition elements because they have completely filled d orbital. Their d orbital is completely filled. So these are not transition. Not only they have complete d orbital in their ground state, but also in their oxidation states. Like अगर जिंक है तो ये D10NS2, जिंक प्लस 1 के लिए DnNS1. For zinc plus 2 it will be D10NS0. means कि D completely fill ही रहता है. That's why these three elements are not included in transition elements. ये तीनों कहाँ पे हैं periodic table में? अगर हम वापस जाके अपना periodic table देखें एक मिनट तो आप देखेंगे जो लास्ट पे हमारा 12th ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं ये तीनों, मर्करी, कैडमियम और जिंक. So these three are not considered as transition elements. This is exception to the generalization.
Now we will see the electronic configuration of transition elements. We will have a look on the configuration of 3D series only. 3D series means their electrons are filled in the d orbital of third shell. कहाँ से start होती है 3D series? From scandium to zinc. Here in the table you can see all these elements listed and their atomic number in front of them. Let's have a look at their configuration. First, these are 21 electrons. 18 will be filled just like argon. Remaining 3 will be filled like this. Aufbau principle के according, as subshell has lower energy, so it will be filled earlier. It will be filled before the 3D. तो पहले 4s fill हुआ है, then 3D में remaining electron जो एक था वो आ गया. In the same way titanium में 4s is completed earlier than 3D 2. वेनेडियम में 4s2 3D 3. इसी तरह से सारी फिलिंग होती जाती है, but we see few exceptions there. In the case of chromium and in the case of copper. क्रोमियम में क्या है, यहाँ पे 3D3 है, इट शुड बी 3D4 बट इट इज 3D5. ये 3D4 नहीं हुआ, डायरेक्ट 3D5 हो गया है. इन द सेम वे निकल में 3D8 है, तो यहाँ पे 3D9 होना चाहिए था, बट ये 3D10 हो गया है. और यहाँ पे दूसरा क्या इसने रूल को अनफॉलो किया है, एस सब शेल की एनर्जी कम है, 4s इज ऑफ लोअर एनर्जी, but 4s में अभी स्पेस है, even then electron is coming to 3D. In the same way here 4s is not complete but electron is coming in the d orbital. तो ये जो लॉ है उसको अनफॉलो क्यों करता है, उसे फॉलो क्यों नहीं करता, डिसोबे क्यों करता है? बिकॉज there is a special stability associated with the half filled and completely filled orbital. हाफ फील्ड और completely filled के साथ स्पेशल स्टेबिलिटी एसोसिएट होते हैं. इन ऑर्डर टू गेन दैट स्टेबिलिटी इट डजंट फॉलो द अफबॉ प्रिंसिपल एंड गेन द स्टेबल स्टेट. यहाँ पे भी ये हाफ फील्ड हो गया. 3D5 4s1 बोथ आर हाफ फील्ड. सेम इन द केस ऑफ कॉपर, 3D10 हाफ फील्ड है और 4s1 3D10 completely filled है और 4s1 half filled है. Both are the stable states. That's why to gain the stability they do not follow the Aufbau principle. ये हमारी configuration है. Two are the exceptions, chromium and copper. Other are in the sequence. That's it. After this we will study the general properties of transition elements in detail. Before starting the properties of transition elements, we need to revise that zinc, cadmium and mercury are not transition elements. So when we will talk about the properties of transition elements, we will be excluding these three. मीन्स कि इन तीनों की बात नहीं होगी क्योंकि ये ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं हैं, लेकिन इनके अलावा जितने भी हैं दे आर समवट सिमिलर इन प्रॉपर्टीज एंड इन ट्रेंड्स. First property, multiple oxidation states. Transition elements show multiple oxidation states, like you see copper plus 1, copper plus 2, iron plus 2, iron plus 3. In the same way chromium show plus 2, plus 4, plus 6. Why these show multiple oxidation state? Because of low gap in energy between the possible oxidation states. जो different oxidation states possible हैं उनमें energy gap low होता है. That's why they can exhibit many oxidation states. Next property is paramagnetic behavior. What is paramagnetism or what is paramagnetic behavior? Attraction towards the magnetic field is called paramagnetism. ठीक है, जो कंपाउंड्स मैग्नेटिक फील्ड में अट्रैक्ट होते हैं उन्हें हम पैरामैग्नेटिक कंपाउंड्स कहते हैं. द ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर. व्हाई? बिकॉज दे हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विच जनरेट देयर ओन मैग्नेटिक फील्ड विच रिएक्ट विद द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड फ्रॉम द outside. That's why these are paramagnetic.
रीज़न क्या है? क्योंकि इनमें अनपेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं। देन थर्ड प्रॉपर्टी इज कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन। ये बहुत ही यूनिक प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की। दे फॉर्म complexes वाई? बिकॉज अ लार्ज वैरायटी ऑफ लिगेंड्स कैन बाइंड टू दीज एलिमेंट्स। लिगेंड्स जो हैं वो इन एलिमेंट्स के साथ बाइंड कर सकते हैं। व्हाट इज लिगेंड? Any species which can donate electron pair is called as ligand. Ligand अपने electron pairs इनके empty d orbital में donate कर देते हैं. That's why they form stable complexes. Next come catalytic properties. Transition metals have catalytic properties that are very useful in industrial production of some chemicals. बहुत से जो हमारी reactions हैं, जो processes हैं, उनके अंदर जो catalytic function है वो transition elements perform करते हैं. For example, iron is used as a catalyst in the Haber process. Haber process क्या है? जो अमोनिया की preparation है वो. In the same way, sulfuric acid की preparation में vanadium pentaoxide V2O5 is used as a catalyst. It is also a transition metal based compound. In the same way, when we do the hydrogenation of alkenes to form alkanes, we use nickel. That is also a transition metal. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज कलर्ड कंपाउंड्स. ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं इनके कंपाउंड्स और आयंस बोथ शो कलर्स. द कलर इज ड्यू टू द डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स मूव फ्रॉम one d to the other. We know there are 5 degenerate orbitals for d. dxy, dyz, dxz, dz square, dx square, y square. ये स्प्लिट हो जाते हैं इन 2 and 3, इन 2 sets of 2 and 3 orbitals. ये सेम लेवल पे होते हैं. We can draw them like this way. तो इलेक्ट्रॉन जब यहाँ से लोअर डी से अपर डी में जाते हैं तो वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, सर्टन वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं, और जो एब्जॉर्ब कर ली है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ट्रांसमिट करते हैं, विच शो द कंपाउंड एज कलर्ड कंपाउंड, जिसकी वजह से जो हमारा कंपाउंड है वो कलर्ड शो होता है. तो हम कहते हैं these transition compounds or ions are colored because of d transition. When electron is promoted from lower d to the upper d, it absorbs some light from the white light. हमारे पास जो लाइट है वो वाइट होती है ना, तो उसमें से कुछ को एब्जॉर्ब कर लेता है एंड ट्रांसमिट द कॉम्प्लीमेंट्री कलर विच कैन बी सीन. इसमें एग्जांपल क्या है? टाइटेनियम का ये कॉम्प्लेक्स है. इट अपीयर पर्पल इन कलर. ये पर्पल कलर का होता है. इसी तरह से बहुत से कंपाउंड है, लाइक कॉपर सल्फेट के हैं तो वो ब्लू होते हैं. तो जितने भी हमारे पास ट्रांजिशन कंपाउंड्स हैं, दीज आर ऑल कलर्ड. नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज द एटॉमिक और ionic radii. As we know, when we move from left to right in a periodic table, the atomic radii decrease. Atomic radii decrease होता है. General trend ये है, but जो transition elements है, their trend of atomic and ionic radii is a bit different and interesting. It has basically 3 parts. From moving group 3 to group 6, एटॉमिक रेडियाई एंड आयनिक रेडियाई डिक्रीज होता है. वही ट्रेंड फॉलो करता है जो जनरल ट्रेंड है. वाई? बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इंक्रीजिंग, शील्डिंग इफेक्ट इज स्मॉल, ग्रुप ऑफ न्यूक्लियस इज स्ट्रॉन्गर. दैट्स वाई एटॉमिक रेडियाई डिक्रीजेज फ्रॉम ग्रुप 3 to group 6. Second category is from group 7 to group 10. इन ग्रुप्स में एटॉमिक रेडियाई ऑलमोस्ट रिमेन कांस्टेंट. सिमिलर है, इतना चेंज नहीं होता. नीदर इट इंक्रीज नॉर इट डिक्रीज.
You can say here is a tie battle, means कि draw हो रहा है match between the protons between the nucleus grip and the shielding effect. Both are equal, that's why the size is neither increasing nor decreasing. Then there come the third category, group 11 and 12. यहाँ पे क्या हुआ है, shielding effect win कर गया है. Shielding effect is dominant. Electron repulsions are more. And secondly, d orbital complete हो जाता है जिसकी वजह से वो relax करता है. So the atomic and ionic radii of group 11 and 12 are larger. यहाँ पे increasing trend है 11 से 12 में. एटॉमिक रेडियाई इंक्रीज होता है. तो यहाँ पे हमने 3 डिवीजन्स पढ़ी. फ्रॉम ग्रुप 3 to 6 डिक्रीज, 7 to 10 रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट और सेम. फ्रॉम 11 and 12 it goes on increasing. नेक्स्ट इज द आयनाइजेशन एनर्जी. इसको ब्रीफली देखेंगे. आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स increase while moving along the row. Ionization energies इनकी increase होते हैं because atomic number तो increase ही हो रहा है. That's why the grip of nucleus became stronger and it became difficult to remove electron. There are few more properties to view. These elements have large ratio of charge to the radius. Second one, transition metals tend to be hard and they have high densities as compared to other elements. Hard होते हैं और इनकी densities high होती हैं. The melting and boiling points of these elements are high due to the participation of delocalized d electrons in the metallic bonding. Last one is the metallic bonding of delocalized d electron also causes transition metals to be good conductors of electricity. Delocalized d electron की वजह से melting and boiling points are getting high, and second one, they are acting as good conductors of electricity. We have studied that transition metals have high melting and boiling point than other metals. What's the reason behind this? अब यहाँ पे हम उसकी reason देखेंगे जो अभी हमने property पीछे पढ़ी है. As we know, transition metals हैं, इनमें d orbital है जो कि partially filled है. It has unpaired electron. वो जो unpaired electron है, they will form covalent bond. Metallic bond is already present. कोई भी metal है तो metallic bond present है. But in addition to metallic bond, they form covalent bond due to the unpaired d electrons, which give them extra strength and makes their melting and boiling points high. Let's go word by word. Presence of unpaired electron leads to the formation of metal-metal covalent bonds along with the metallic bond. These strong bonds attribute high melting and boiling points to the elements. The presence of partially filled d orbitals enables the transition elements to have greater number of unpaired electron. Unpaired electrons ज़्यादा होंगे, which in turn increases their ability to form covalent bond along with the metallic bond. नेक्स्ट एक छोटी सी टर्म है ट्रांजिशन मेटल्स से रिलेटेड, नोबल मेटल्स. व्हाट आर द नोबल मेटल्स एंड व्हाई दे आर कॉल्ड नोबल मेटल्स? In the lower right corner of the periodic table there lie gold, silver and platinum. These three metals are termed as noble metals. तो first question हो गया, what are the noble metals? These are gold, silver and platinum. Why these are termed as noble? Because these are highly unreactive. Highly unreactive है क्यों? Because of their low enthalpies of hydration and high ionization energies और ionization enthalpies. इनकी ionization energies high हैं and enthalpies of hydration low हैं. That's why they do not react. They are highly unreactive. In the last, we will have a look on the uses or applications of transition metals. First of all, iron, a well-known transition metal, is widely used in the construction industry.
जितना भी कंस्ट्रक्शन मटेरियल है आयरन से बना होता है. Not only iron used singly but it is also used to form alloy. आयरन को दूसरे मेटल्स के साथ मिक्स करके अलॉय बनाए जाते हैं और वो अलॉय भी कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में यूज होते हैं. वन मोस्ट कॉमन अलॉय इज स्टील which has greater strength and versatility. Next application is as a catalyst. Transition metals also work as catalysts for the industrial processes. Here again come the examples of iron in the Haber process. You may write other examples as well. Titanium and other transition metals used in aircraft, piping for nuclear power plants, in artificial hip replacement. इन सब में ये metals जो हैं या इन metal के alloys use होते हैं. The primary application of transition metal nickel is in the production of stainless steel. Stainless steel एक alloy है, इसमें निकल को यूज किया जाता है, तो ये alloy जो है वो prepare होता है. Next, copper is a transition metal. It is widely used in electrical wiring. Why? Because of its high tensile strength, malleability and ductility and electrical conductivity. Easily wires और sheets में convert हो जाता है, अच्छा conductor है, that's why we use it. There are many other applications you can find easily. You can also comment a few of applications you already know in the comments. If you have any question or any confusion regarding this topic, you can ask freely in comments. Don't forget to like and subscribe the channel. Thank you for watching.